ज्यादा रिस्की क्या है? ओबेसिटी, डायबिटीज या अल्कोहलिज्म? The high blood pressure, the cholesterol, the pre-diabetes, the diabetes is now starting to outpace the damage that is being caused by alcohol. Girls with PCOS, you have to remember the acne, the excess hair growth, etc. are sometimes again just warning signs for fatty liver, for hypertension, for dyslipidemia, for diabetes. लेकिन लोगों को अवेयरनेस कितनी है इसके बारे में? तो इट्स नॉट समथिंग दैट वी शुड इग्नोर। अगर लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस नहीं काम करता है और वो लिवर डिजीज प्रोग्रेसिव हो रही है तो अभी दवाइयां हैं जिससे हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। 10% तक अगर वेट लॉस करते हैं इससे लिवर फैट कम हो जाएगा, लिवर को हीलिंग मिलेगी और कुछ लोगों में ये कम्प्लीटली रिवर्स भी हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैनल डिस्कशन में, लिवर की सुनो बाय जाइडस। यहाँ हम बात करने वाले हैं लिवर हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में और कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन लिवर डिजीजेस से जो चुपके से हजारों नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ इंडियंस को अफेक्ट कर रहे हैं। हम सबको पता है कि इंडिया आज डायबिटीज, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, थायराइड और पीसीओएस जैसे मेटाबॉलिक डिजीजेस में टॉप कर रहा है। नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सब प्रॉब्लम्स एक दूसरे से लिंक्ड भी हो सकते हैं और ये डायरेक्टली आपके लिवर को इम्पैक्ट कर रहे हैं? ये एक कनेक्शन है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल है। आज हमारे साथ है एक एक्सपर्ट पैनल, इंडिया के टॉप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट्स एंड डायबिटोलॉजिस्ट्स, जो एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं हमारे बॉडी के एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन लिवर को। अगर आप या आपका कोई भी क्लोज वन मैनेज कर रहा है डायबिटीज, वेट गेन या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स, तो ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हमारे एक्सपर्ट पैनल में हैं हमारे साथ डॉक्टर संजय अग्रवाल, डॉक्टर पिया बलानी, डॉक्टर अल्तमाश शेख एंड डॉक्टर उषा अयागरी। डॉक्टर्स, वेलकम टू लिवर की सुनो। सबसे पहले हम हमारे एक्सपर्ट डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय अग्रवाल जी से पूछेंगे कि सर आप बताइए, लिवर मेटाबॉलिज्म के साथ क्या रोल प्ले करता है? क्या वो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है या इट्स वाइस वर्सा? I think that's an excellent question because liver is the powerhouse of the body. It does a lot of chemical processing and it's involved in multiple functions which are related to the body. I would say if the liver functions, you function, right? So it is involved in detoxifying a lot of harmful substances. It is involved in synthesizing a lot of proteins for the body. It synthesizes a lot of clotting factors. It is involved in maintaining the blood glucose levels in a very tight range. So it sort of causes blood sugar formation. It also causes blood sugar storage. And when you have, non-carbohydrate substances, it can synthesize glucose from non-carbohydrate sources also. So it does multiple functions and we need to be aware of the fact that liver should be preserved and taken care of. तो वैसे मैं और मेरे कई दोस्त अपने मेटाबॉलिक रेट को काफी ज्यादा ब्लेम करते हैं, सो मे बी वी हैव टू एक्चुअली टेक बेटर केयर ऑफ आवर लिवर। Absolutely, I agree with you. मेरा अगला सवाल आपसे है डॉक्टर प्रिया कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ह्यूमन हेल्थ पे कैसे असर डालता है? Right. So, Divyanka, let's first understand insulin, right? Insulin is a pancreatic hormone. The job of this hormone is to control blood sugar. So today, आज हमने सब एक बड़ी breakfast खाई है. All those carbohydrates are getting broken down into glucose. अभी उस glucose को cells के अंदर डालने का काम है insulin का. Insulin opens the door of the cells and lets the glucose in. But sometimes when there's a genetic backdrop, or sometimes if there is a chronic overload of, let's say, unhealthy nutrients, these cells start ghosting the insulin. They get desensitized to insulin. Insulin knock kar raha hai, darwaza khul nahi raha hai. So as a result of which the blood sugar starts going up. Abhi is halat mein what the response is, the pancreas will compensate by making more and more insulin. And now you have a situation, lots of sugar, lots of insulin. So this becomes the backdrop firstly for pre-diabetes and diabetes. Now this sugar is all in the blood. Sugar jayega kahan? Liver baitha hai. So the liver is getting up all this glucose. The liver starts becoming
fatter and fatter. Now, when all this injury, and this is where the liver starts getting injured, the liver has to put out all of this fat somewhere, so the liver starts taking out bad cholesterol, which ultimately becomes the foundation for heart disease. So over here, insulin is that hormone. Jab that insulin is not working efficiently, you have pancreatic problems, you have fatty liver, you have high cholesterol, you have heart disease, all of them linked to insulin resistance. Now, the shocking part over here is that ये insulin resistance, Divyanka, starts actually in very, very early years. आजकल हम देखते हैं teenagers में, adolescents में, you often will see ये सब darkening of skin, जिसको हम बोलते हैं armpits में, back पे, neck पे, that is. And all of these are signs that insulin resistance has started out. Because right now, screen time और snacks, सबके बड़े दोस्त. So उसके वजह से ये insulin resistance is starting out very early, due to which when fatty liver, आप देखते हो by chance sonography वगैरह पे, that is one of your first signs कि insulin resistance is setting in. एक टाइम पे तो हम बहुत शुगर खाते थे, फैटी फूड भी खाते थे, उछल कूद बहुत मचाते थे, तो मे बी दैट डाइजेस्टेड इट, वो हेल्प करता था So क्या? right now, I think, Divyanka, we are in an environment, right? Ultra processed, ultra portioned, inexpensive, very easily available, heavily advertised food. True. And our ancestors were hunters, gatherers, farmers. Now we are all couch potatoes. अच्छा, तो यहाँ आने से पहले आई वाज रीडिंग अ लिटिल बिट अबाउट लिवर, क्योंकि आप लोगों से बात करने जा रही थी, तो मैंने ना एक टर्म देखा, नया टर्म है MASLD. ये होता क्या है डॉक्टर अल्तमाश, आप बताएंगे? आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम MASLD के बारे में आज बात कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल, ये बीमारी का पहले जो नाम था NAFLD था. ये कहाँ से आया? जैसे पहले ज़माने में अल्कोहल से लिवर ख़राब होता था, जिसको ALD बोलते थे या फैटी लिवर डिजीज़ बोलते थे. बट कुछ हिस्सों में देखा गया है कि काफ़ी लोगों में इस तरीके की बीमारी, जो लोग अल्कोहल नहीं लेते, उनको भी हो रही है. अब ये आया है, जैसे आपने डॉक्टर प्रिया को सवाल पूछा कि पहले ज़माने में हम मिठाई खाते थे, फ्राइज़ भी खाते थे, लेकिन अब उसको अगर हम कनेक्ट करें तो अब ये फ्राइज़ और चीज़ें जो है, ये इससे लिवर में चर्बी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम अभी फैटी लिवर ना बोलकर, NAFLD ना बोलकर, अब ये नाम आधारित है मेटाबॉलिज्म के ऊपर, जिसको बोलते हैं MASLD, जिसका फुल फॉर्म इंग्लिश में है मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज. सिंपल वर्ड्स हमारे श्रोताओं और व्यूअर्स के लिए, जैसे मेटाबॉलिक लिवर डिजीज, स्टीएटोटिक लिवर डिजीज. जी, या ये नाम डेफिनेटली डिफिकल्ट है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर्स की लिस्ट में ये सारे नाम और एनसाइक्लोपीडियाज 1000 पेज की बुक्स वगैरह रहती हैं. सो आते हैं आपके क्वेश्चन पे. MASLD जो नया नाम पिछले 2 साल से दिया गया है, तो फैटी लिवर को आउट करके, क्योंकि एक स्टिग्मा होता था कि चर्बी वाला लिवर है या चर्बी भरा हुआ लिवर है, तो उसको MASLD कॉज के हिसाब से नाम दिया गया है. अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? रिस्क फैक्टर में एक होता है मधुमेह या डायबिटीज़, मोटापा या ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर या रक्तदाब जब बढ़ जाता है, कोलेस्टेरॉल या ब्लड में चिकनाई की मात्रा जब बढ़ जाती है, या बॉर्डरलाइन डायबिटीज़, जिसको इंग्लिश में प्री डायबिटीज़ बोलते हैं. ये 5 इसके मुख्य रिस्क फैक्टर और कारण होते हैं, जिसकी वजह से लिवर में, नॉर्मल लोगों के लिवर में चर्बी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम MASLD बोलते हैं. इन शॉर्ट इसको याद रखने के लिए हम कह सकते हैं MASLD का मतलब है लिवर इज इन ट्रबल, जब आपका BP शुगर हाई आर इन स्ट्रगल. तो मतलब कि आज के ज़माने में MASLD बेटर टर्मिनोलॉजी है, इज इट? यस इट इज़, क्योंकि अभी सिर्फ फैटी लिवर नहीं कहलाया जाता है, हम कोई मेटाबॉलिक फैक्टर्स जैसे रहते हैं उससे एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे आप डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है फैटी लिवर के साथ में. इसलिए एक नया टर्मिनोलॉजी जो है, जैसे डॉक्टर अल्तमाश ने बताया कि MASLD हम बोलते हैं और फैटी लिवर नहीं बोलते हैं. सो डॉक्टर उषा, आपका क्या कहना है इस बारे में कि ये MASLD जो है, ये टर्मिनोलॉजी आज के ज़माने में इज इट मोर अप्रोप्रिएट? So I think the point of any terminology is to actually convey its importance to not just the doctors but to the public, right? We're trying to put the message out there of what are the effects of this on your health. If I say fatty liver, you think, okay, it's just fat in the liver. But once we say it's a metabolic liver disease, people start thinking that it is wider than just the liver. And as Dr. Altamash has just said,
it's associated with so many more conditions that affect your health on a wider basis. And by giving it the correct name, the public understands that this isn't just confined to the liver. There is prediabetes, diabetes, high blood pressure, cholesterol, potential future heart disease, and other complications. So once you bring in the word metabolic, the wider implications of what this liver can do to affect your health is brought to the fore. Not just that, it then also gives us multiple factors for us to address, because we're not just looking at the liver anymore and saying reduce the fat in your liver. We're saying the effect of this on your wider system, we need to address it as a whole. So when we look at the liver, we're looking at your entire metabolic risk profile. We're looking at your blood pressure, we're looking at your cholesterol levels, your sugar levels, and then we're trying to manage you as a whole and not just one tiny bit of you as the liver. So for you and for me, it becomes a much more fruitful discussion once we bring in the entire metabolic aspects of the liver problem. सही बात है, क्योंकि एक ज़माने में तो सिर्फ अल्कोहलिज्म को फैटी लिवर के साथ एसोसिएट किया जाता था, बट देयर इज सो मच मोर टू इट, जो मैं भी सीख रही हूँ. Very true, because originally when we saw liver disease, it was mostly because of alcohol. In fact, now fatty liver disease is a diagnosis of exclusion almost. You rule out alcohol beyond safe limits. You rule out other causes like, for example, viruses. And then what you're left with is this fatty liver disease that is then due to your metabolic dysfunction, which we then call MASLD or the MASLD. And then we come down to the business of tackling it. So Dr. Pia, I'll come back to you. MASLD, ये बस ऐसे ही होता है एक ही स्टेज में, या इसके अलग-अलग स्टेजेस हैं जिसमें ये बढ़ता भी है या कम भी हो सकता है? How is it? Right. That's a very good point, Divyanka. So basically, the liver cells contain less than 5% of fat by weight. Okay. The threshold is that when this 5% of fat inside the liver cells gets crossed, that is when we call it fatty liver. So fatty liver, like you said, does go through what we typically describe as 4 stages. The first stage, simple steatosis, fatty liver. Basically, isme the fat is collecting a little more than 5%. The person has no symptoms, feeling completely well. Blood test karenge, completely normal. Shayad ek ultrasound kiya ho, fatty liver dekha, wo page turn kar diya. So as a result of which we really don't pay attention. But the importance here is that this stage 1 is completely reversible. Now, out of this, 30 to 40% of patients will move on to stage 2. Now, this is over a few years. This is not a very fast progression. It's a slow progression. In stage 2, basically what is happening, this is what we call MASH. Again, big words, metabolic associated steatohepatitis. When you finish medical school, they say you've learned 10,000 new words. I think that's an understatement, but anyway. In MASH, what is happening? There is inflammation. That means that the liver cells are getting injured. They're starting to get ballooned. And even then, the patient might not have any symptoms at all. Blood tests might show a little bit of abnormality. Ultrasound, again, you're going to show that grade 2. Good news again over here, completely reversible if you put your correct lifestyle changes and certain medications also into place. Now, 20 to 30% of these patients will move into stage 3. This is especially when you have a background of diabetes, of cholesterol, of high cholesterol, high blood pressure. These patients who move on to stage 3 is what we call the stage of fibrosis. Fibrosis is basically liver चाह रहा है कि मैं अपने आप को ठीक कैसे करूं. So the liver starts trying to heal itself, but in that process of healing, it's causing the formation of tiny little scars. So when we get hurt, it heals, it causes a little bit of a scar. So that's what's happening. A little bit of scarring starts out in the liver. The liver is trying to heal itself more and more, but the scarring also is more and more. And when you have scar tissue, those liver cells are not working. So that is the problem with the scarring. So the liver is trying to do a good job, but in the process, the function of the liver is coming down, and that fibrosis stage can be progressive again over 10 to 20 years. Come stage 4, 5% of these patients will move on to what we call cirrhosis, which is end-stage liver disease. Over here, what's happening is that there is irreversible scarring. The whole architecture of the liver is basically irreversibly damaged, is distorted. The function of the liver is permanently gone. So all of the functions of the liver that Dr. Agarwal had described a little earlier, liver karta hai itne zyada functions. So all of those functions are getting disturbed.
So the patient might present to us with bleeding, with fluid retention, sometimes even with liver cancer. So what's important over here is that, important again, one, maybe majority of patients will be in stage 1 to 2. That is the good news. But the importance is early awareness, early action can prevent that percent of patients, 5 to 8% of patients who are going to move into end-stage disease can be avoided if you start early, hit hard. तो ये जो फाइब्रोसिस की आपने बात की एट स्टेज 3, क्या ये कैंसर से एसोसिएटेड होता है? So this can be the beginnings. So when you have any tissue anywhere in the body that remains chronically inflamed, chronically irritated, that tissue can become the bedrock for cancer. And that is true for anywhere in the body. Chronic inflammation is the bedrock. So you're right. Fibrosis, because you have hepatitis, which is inflammation, then fibrosis, then you have cirrhosis. All of this is the underground works towards liver cancer. 4 स्टेजेस में होता है। आप बेहतर है कि पहले स्टेज में ही संभल जाए, सुधर जाए, नहीं तो दूसरा स्टेज मैक्सिमम प्लीज। और उसके लिए आई थिंक बेटर डाइट, राइट, हेल्दी फूड, वही है मेरे ख्याल से रास्ता। क्योंकि मैं अभी तक जितनी बातें सुन रही हूँ मेरे को समझ आ रहा है गंदा खाना मुझे आज ही छोड़ना पड़ेगा। नो मोर चाट्स इन माय लाइफ नाउ। सो डॉक्टर अल्तमाश, अभी हम जानते हैं कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये तो बहुत ज़्यादा ही केसेस बढ़ गए अब इंडिया में। हमारा इंडिया इनफैक्ट लीड कर रहा है डायबिटीज़ में, जैसा कि मैंने सुना है। तो इसका फैटी लिवर पर असर पड़ता है? सबसे पहले ये है कि जो लोग मोटापे के शिकार है, जिसका मतलब है एक रफली अगर BMI इंडियन लोगों का अगर 25 के ऊपर है, जिसको हम मोटापा बोलते हैं, जहाँ पर डेफिनेशन हो जाती है मोटापे की एक एंगल से, 90% लोग जिन लोगों को मोटापा है उनको फैटी लिवर या MASLD होता है. दिस इज नंबर 1. 90% of people, those who are obese, they have MASLD. That is the risk factor. Second, 70 to 80% of diabetes, मतलब 70 से 80% लोग जिनको डायबिटीज़ है उनको MASLD होने की बहुत ज़्यादा रिस्क है. ये दो. अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे आपने कहा कि मैं चाट छोड़ दूंगी, तो आपको चाट छोड़ना नहीं है, हमको डरना नहीं है, हमको MASLD से लड़ना है. तो जो लोग जो लोग चाट खाने की मेहनत रखते हैं उनको मूवमेंट और एक्सरसाइज की मेहनत भी करना पड़ेगा. चाहत और मेहनत को कंबाइन करके ही ट्रीटमेंट होगा. एंड थर्ड पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, हमने जो पहले जवाब में सुना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, जहाँ पर स्किन के कुछ हिस्से डार्क हो जाते हैं या काले हो जाते हैं, वो जो है इसका मेन कॉज है. So too much of sugar, too much of fat, they make your liver struggle with the liver fat. जब वहाँ पर ये हो जाता है तो ये फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ पर डैमेज होना स्टार्ट होता है. तो अगर सबसे ज़्यादा शक्कर और लिवर के अंदर इस तरीके का फैट लेवल्स बढ़ गया है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज वेयर योर डायबिटीज़ इज़ अबाउट टू स्टार्ट, जहाँ पर हमको बहुत ही सतर्क रहना होगा. और जैसे आपने ऑलरेडी कहा, इसका सबसे सरल, सस्ता, सुंदर उपाय ये है कि अच्छा खाना खाइए, लेकिन अच्छे तरीके से खाइए. अगर खाना, आपने जो वर्ड यूज कर दिया कि गंदा खाना, बेसिकली इट मीन्स हेल्दी फूड, सही मात्रा में, मॉडरेशन में अगर हम खाएंगे तो उसका बहुत इजी रहता है. सो दैट्स हाउ वी टेक इट फर्दर. सो डॉक्टर उषा, अगला सवाल मेरा आपसे है कि ये जो हम हमेशा ही सुनते रहते हैं कि अल्कोहल इंटेक के कारण फैटी लिवर बढ़ता है, ये कितनी मात्रा में होता है? क्या अल्कोहल से ही ज़्यादा बढ़ता है? आज जैसे मेटाबॉलिक रेट की बात कर रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म से भी होता है, ज़्यादा रिस्की क्या है, ओबेसिटी, डायबिटीज़ या अल्कोहलिज्म? It's not a race, it's not a competition. Both are harmful. Alcohol, obesity, fatty liver, harmful. Zamane mein, we didn't even recognize these metabolic associated problems as a cause for fatty liver disease. We knew that alcohol damages the liver. And we knew that by reducing alcohol, now actually there is a school of thought that says that no amount of alcohol is safe. That any amount of alcohol has the potential to cause damage one way or the other, whether it's your liver or your other health. There is another school of thought that says that alcohol in moderation, especially maybe red wine, which has resveratrol, may have some benefits. But let's put that aside. Alcohol can damage the liver. But what we've come to understand is that these metabolic causes that we've been discussing, the high blood pressure, the cholesterol, the pre-diabetes, the diabetes, all these have a huge effect on the liver. And unfortunately, it is now starting to outpace the damage that
is being caused by alcohol. Because as has just been discussed, 90% of people living with obesity, 70% of people living with diabetes now have fatty liver disease. And just the sheer numbers of it, because let's say in India, we have, even if it's only 10%, and that's not an accurate figure because the majority of our diabetes remains undiagnosed. But let's say in a population of 1 point something billion, 10% have diabetes, and then 10% of, or just 80% of those people. So in our population, let's say 8 to 9% of our population has a fatty liver. The tsunami that's hitting us is huge. By definition, MASLD, metabolic associated steatotic liver disease, steatotic just means fat, fancy words, that's all it is associated with all these cluster of problems that we've discussed. But if you look at the population level prevalence, the sheer numbers are huge, and our ability to cope with this is severely restricted. If we want to look at it, leave out alcohol, this is a diagnosis of exclusion. You've done the test to make sure that alcohol is not the issue, that other things like viruses have been ruled out, but then you're left with our lifestyle associated, weight gain associated, metabolic associated liver disease. And the sooner we recognize this, the better, because at a population level, this is huge. It's actually alarming. It's scary, isn't it, when you think of the numbers? तकरीबन 8% लोग, 8% भारतीय लिवर डिजीज से ग्रस्त होंगे, और वो उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि एक्चुअली वो इस डिजीज के लिए ससेप्टेबल हैं It's या silent. That's the thing. It's silent for the majority of its course. क्योंकि ये एक ऐसी परेशानी जो ऊपर से बिल्कुल नजर नहीं आती है, लेकिन जैसे आपने कहा छोटे छोटे साइंस होते हैं, उन्हें पकड़ना होता है. अच्छा, मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स को PCOS की प्रॉब्लम है, सो मैं उनके लिए स्पेशली ये वाला सवाल पूछना चाह रही हूँ कि क्या उन्हें अपने लिवर हेल्थ को लेके कंसर्न रहना चाहिए? शुड दे टेक एनी स्पेशल केयर? डॉक्टर पिया, आप क्या कहेंगे इसके लिए? So you said it absolutely right, Divyanka. There is a connection between liver disease also and PCOS. But coming to PCOS, like you said, this is a very complex disease with a background, genetic, environmental, stress. Ultimately, what all of these collide and cause is a whole hormonal milieu of complete, like let's say a bad environment hormonally. The common background between PCOS and liver disease is that they have one common villain in this entire health drama mein. Villain? And that villain is insulin resistance again. So when insulin is not working efficiently, like I spoke about earlier, insulin levels go up, and the pancreas are making more insulin. So when the insulin levels are going up, the effect of this high insulin on the ovaries is to make excess male hormone, which is testosterone, due to which the girls will have acne, excessive hair growth, irregular periods. All of this is coming from excess insulin working on the ovary. The same excess insulin at the level of the liver is causing the liver to bulk up and become more fatty. As a result of which, girls with PCOS, you have to remember the acne, the excess hair growth, etc., are sometimes again just warning signs that in the future, these same women have a higher risk for fatty liver, MASLD, for hypertension, for dyslipidemia, for diabetes, for heart disease. So the PCOS symptoms are just the window which tells them, take care of yourselves later. The good news over here is the treatment for both the fatty liver and the PCOS is the same. Lifestyle change. Thank God. It's a two-in-one treatment. You treat this and that also. The liver disease and the PCOS both need the same kind of lifestyle modification. शुक्र है, मैं तो डरी गई थी कि बेचारे PCOS से तो जूझ ही रहे हैं और उसके बाद में उनको एक और चीज़ को एड्रेस करना. बट ये अच्छी बात है कि अगर लाइफस्टाइल को चेंज कर लें तो PCOS के साथ साथ लिवर भी ठीक हो जाएगा. Right. And I will add one more thing कि I feel that all, like your friends with PCOS, इनको ये बताना ज़रूरी है कि लिवर के बारे में अपने फिजिशियन के इसके साथ जाके बात करें. Because when you have the awareness now that talk to your physician, what about my liver? Especially if they're seeing fatty liver, they're seeing high insulin levels, etc. It's important to understand, how do I take care of this? What do I need to be aware of? So better management. Absolutely. Especially in those teenage years and in the 20s, women living with PCOS, a
don't, maybe because of lack of awareness, maybe because of lack of focus, don't worry about their metabolic health. As Pia just said, they're worried about their acne, their hair growth, menstrual cycles, maybe fertility. But at the end of the day, the final common pathway, we have to handle the metabolic aspects of it. And putting the message out as we are doing today will actually help people realize that even though PCOS, there are certain symptoms that are distressing today, for long-term health, the changes that we need to make start today. So to summarize what Dr. Usha and Dr. Pia said, ये मैंने एक चीज़ समझ ली है कि हम लोग आमतौर पे अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। कितने सारे एड्स, रील सब चल रहे हैं, आप ये एक्ने क्रीम लगाइए, वो कीजिए, ये वाला फेस पैक लगाइए, बट अंदर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप लिवर की तरफ ध्यान देंगे, इंटरनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट एड्रेस्ड। Absolutely. सो डॉक्टर संजय, मैं आपसे स्पेशली जानना चाहूँगी, इंडिया में फैला तो हुआ है ये फैटी लिवर का इशू, MASLD भी बहुत लोगों में है, 8% जैसे कि हमने बात की है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस कितनी है इसके बारे में? आई थिंक इस बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, राइट? अगर आप देखोगे, कई बार हम अपने हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखते हैं कि ग्रेड 1 फैटी लिवर लिखा हुआ होता है, राइट? और हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, डॉक्टर्स भी नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ठीक है, आपको फैटी लिवर है, थोड़ा आप अपना हेल्थ पे ख्याल रखिएगा, सही खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, देखिए क्या होता है. सो वी रियली डोंट टॉक मच अबाउट फैटी लिवर, बट आई थिंक द कॉन्वर्सेशन फॉर फैटी लिवर शुड स्टार्ट एट द टाइम व्हेन यू सी एनी साइंस ऑफ MASLD, right? If you look at the statistics, almost 30 to 40% of our population tends to have some form of fatty liver. Okay, it's not that really uncommon. And if you look at even children, and they have now a high incidence of childhood obesity, they have equivalent proportions of fatty liver. That's something that we are very concerned about. Now, if you look at associations with other non-communicable disease, जैसे किसी को diabetes है, या किसी को obesity है, या blood pressures है, उनमें almost about 60% of the people may have some form of fatty liver disease, right? If you look up obesity and fatty liver disease, a very high proportion, almost about 80 to 90% of people who've got morbid obesity will tend to have, fatty liver disease. So it's not something that we should ignore. Because अगर आप इग्नोर करोगे और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो यही एक आगे चल के आपको chronic liver disease बन जाएगा. You may get cirrhosis, and that's end stage liver disease. You may end up with transplants or with cancers that we talked about a little while earlier. So I think every aspect of liver disease should be looked at. Now, often we look at ultrasound reports, we have presence of fatty liver disease, but we look at their blood reports, we don't look at the liver transaminase. So एक जैसे ब्लड टेस्ट होती है जिसको हम ALT या AST बोलते हैं, तो अगर आपकी ALT बढ़ी हुई है और आपको फैटी लिवर डिजीज है तो ये एक इंडिकेशन है कि अभी आपको लिवर को नुकसान कर रहा है, राइट? सो हर एक में अगर आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखते हो तो उनमें आप ब्लड टेस्ट भी करके देखिए कि आपके एंजाइम्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, राइट? और अभी हमारे पास ट्रीटमेंट्स है. अगर लाइफस्टाइल इंटरवेंशन सबसे पहला हमारा गोल होना चाहिए, जैसे सबने बताया है आपको, पर अगर लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस नहीं काम करता है और वो लिवर डिजीज प्रोग्रेसिव हो रही है तो अभी दवाइयाँ हैं जिससे हम उसको रिवर्स कर सकते हैं. तो इसका एडवांटेज हमें लेना चाहिए. अवेयरनेस के तौर पे हम सब ने बात करनी चाहिए हर एक फोरम पे. जैसे ये फोरम पे हम बात कर रहे हैं लिवर डिजीज़ के बारे में और MASLD के बारे में, तो ये कॉन्वर्सेशंस हर एक डॉक्टर के चेम्बर्स में होनी चाहिए, हर एक मीडिया में होनी चाहिए कि आप अपनी लिवर की सुनो, वो आपको कुछ बता रहा है. हाँ. आपकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में, सिर्फ लिवर के बारे में नहीं, पर आपके ओवरऑल हेल्थ के बारे में वो आपको बता रहा है. और मेरे ख्याल से हर घर में, हर फैमिली के बीच में ये बातें होनी चाहिए, क्योंकि हम जहाँ बच्चों की बातें कर रहे हैं, ये तो सोच से ही परे है कि बच्चों को भी हो सकता है MASLD. यस, लिवर डिजीज बच्चे को, ये जो है ये हमारे लिए भी काफ़ी चौंकाता है और ये हम बच्चों में देखते नहीं हैं, तो ये हमने देखना चाहिए. और चाइल्डहुड ओबेसिटी अभी एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो गया है. खास करके हम बच्चों को एनकरेज नहीं करते खेलने के लिए, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए. ज़्यादा सेडेंट्री हो गए बच्चे, सिर्फ या तो वो स्क्रीन्स देखते रहते हैं या सिर्फ पढ़ते रहते हैं. तो आई थिंक वो जो एक्टिव लाइफस्टाइल है
वो उनकी कम होते जा रही है और उसके ऊपर हमने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए। अगर आप बड़ों को भी देखो, जैसे पूना जैसे शहर में जहाँ से मैं आता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूज्ड टू साइकिल आउट देयर। अब हम साइकिल चलाना तो भूल ही गए हैं, वॉक करना भी भूल गए। ज़्यादा हम या तो कार्स में या मोटराइज व्हीकल्स में होते, हम पैदल चलते भी नहीं और चढ़ते भी नहीं है। फैटी लिवर जो हम सबके लिए अब लग रहा है कि काफ़ी बड़ी परेशानी है, उसके लिए कोई स्क्रीनिंग मेथड्स होंगे, टेस्ट होंगे? आप डॉक्टर अल्तमाश मुझे बताइए। श्योर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है अभी, मैं उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आंसर देता हूँ। एक होता है ब्लड टेस्ट सिंपल, जिसको हम SGOT, SGPT, जिसको लिवर एंजाइम्स बोलते हैं, या जिसको कुछ लोग AST और ALT भी बोलते हैं। इनका राइज होना एक इंडिकेशन है कि ये इनको MASLD हो सकता है। A, B इज सोनोग्राफी लिवर का, जिसमें अगर 5% से ज़्यादा फैट है, इसका मतलब आपको MASLD है, मतलब आपको वो वाला प्रॉब्लम है। थर्ड इज फाइब्रोस्कैन, जिसको कहा जाता है, जो कि ऑफ कोर्स कॉस्टली टेस्ट है और बड़ी जगहों पे, बड़े हॉस्पिटल्स में ही मिलता है। और फोर्थ है कुछ टाइप के बायोमार्कर स्कोर्स एंड मेडिकल स्कोर्स, जिसको हम फिप स्कोर भी कहते हैं। तो ये 4-5 चीज़ों के हिसाब से हम देख के इस बीमारी को कैच कर सकते हैं। दीज आर द स्क्रीनिंग टेस्ट एंड कॉन्फर्मेटरी टेस्ट बेसिकली। द इम्पॉर्टेंट लाइन इज कि जितना जल्दी हम इस डिजीज को डिटेक्ट करेंगे, बिकॉज ये साइलेंट डिजीज है, सो डिटेक्ट अर्ली, ट्रीट अर्ली एंड लिव लॉन्गर। तो ये जो टेस्ट है, ये जो पेशेंट है वो खुद कराएं या डॉक्टर के बोलने पे? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन दिव्यांका जी। सो काफ़ी सारे लोग जो हेल्थ टेस्ट रेगुलरली करते हैं, या जो लोग कॉर्पोरेट्स में जिनके टेस्ट रेगुलरली होते हैं हर साल में या कभी साल में 2 बार, उन लोगों के ये टेस्ट ऑलरेडी हमको पता चल जाते हैं, वो लोग खुद रिपोर्ट लेकर आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तभी टेस्ट करते हैं जब फॉर एग्जाम्पल कभी बुखार है या तो टेस्ट कर लिया, या किसी और चीज़ के लिए टेस्ट किया और उसमें लिवर का डिटेक्ट हो गया, तो इनडायरेक्टली भी आते हैं और डायरेक्टली भी टेस्ट के साथ लोग आते हैं। बेसिकली हम उनको हेल्प करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपका लिवर रिलेटेड ही है या किसी और कारण से। जैसे अभी बारिश हो रही है तो डेंगू मलेरिया वगैरह होता है, तो उसमें अगर लिवर एंजाइम्स है तो उसको हम कनेक्ट नहीं करेंगे लिवर के साथ में। सो उनका ट्रीट होने के बाद वी रिपीट इट एंड देन वी कंफर्म इट लेटर। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। सो डॉक्टर प्रिया, हम लोग जो स्टेजेस की बातें कर रहे थे, तो फैटी लिवर का जो मैनेजमेंट है वो हमें अर्ली से अर्ली स्टेज पे शुरू कर देना चाहिए, या फिर मैनेजमेंट कैन बी डिलेड? अर्ली मैनेजमेंट डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, सर्टेनली। और इसका कारण ये है कि बीमारी है साइलेंट, लेकिन बीमारी हार्मलेस नहीं है। लाइक वी स्पोकन अबाउट, इतने लिवर के कॉम्प्लिकेशंस, एंड स्टेज लिवर डिजीज, लिवर कैंसर, एंड अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाता है। Bleeding, swelling, I mean the kind of life the patient has to face is hard. And the twist is here that most patients with liver disease will not experience advanced liver complications first. The first organ that gets affected is the heart. Because these same patients have a higher risk for heart disease, for heart attacks, for strokes, for type 2 diabetes. So there's a lot of, mashup that's happening over here also as well. And so like I always tell my patients कि it's like fixing a small leak in the ceiling. वो leak आप fix करो ताकि ceiling ही आपके ऊपर आके ना गिरे। तो मतलब कि उसके कारण बहुत सारा कोलैटरल डैमेज भी हो जाता है। बिल्कुल। और हमें ना दिव्यांका जी इम्पोर्टेंट क्या है, we are what we call the thin fat Indians. हम लगते हैं सब पतले, सब पतले ज्यादातर इंडियंस में, लेकिन हम सब छुपा रहे हैं ये बीच वाला पेट। एंड दिस इज द अनहेल्दी, मेटाबॉलिकली अनहेल्दी फैट, व्हिच इज द ड्राइवर ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, व्हिच इज द ड्राइवर ऑफ ऑल ऑफ दीज डिजीजेस। सो अगर हमारा वेइंग स्केल बता रहा है कि वेट बराबर है, दैट डजंट मीन कि हम मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं। फिर भी हमें फैटी लिवर के लिए अवेयर रहना चाहिए। अगर आप बाहर से दुबले दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी है अंदर से। यू शुड गेट योरसेल्फ चेक्ड, बी अवेयर। सो डॉक्टर अल्तमाश, ये फैटी लिवर के लिए ट्रीटमेंट क्या है? लिवर की लाइफ लाइन, द फर्स्ट लाइन इज लाइफस्टाइल, जीवन शैली, जिसमें सबसे पहले आता है कि आप 10% तक अगर वेट लॉस करते हैं, इससे लिवर फैट कम हो जाएगा, लिवर को हीलिंग मिलेगी, और कुछ लोगों में ये कंप्लीटली रिवर्स भी हो सकता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो हम बोल रहे हैं। अब ये करने के कई तरीके हैं। स्पेशली एक एग्जांपल है कि हम कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें कम करके भी इसको कर सकते हैं, बट डॉक्टर और डाइटिशियन के गाइडेंस के अंदर किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर ज़रूरी है तो डॉक्टर आपको इसके लिए मेडिसिन भी दे सकते हैं अगर आपका पहली बार में ही सीवियर MASLD बताया है तो। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू लूज एटलीस्ट 10 kg ऑफ वेट। So, I mean, I will conclude by saying
lose 10% weight, live 100%, and you will live longer and better because liver likes lifestyle more than your prescription drugs. डॉक्टर संजय, अब आप मुझे बताइए, आप तो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, अगर वो अपने शुगर को मैनेज करें तो फैटी लिवर में कमी आएगी या फिर इट्स फॉरएवर? I think that's a good question. If you control your blood sugars, it may partially reverse your fatty liver. So it doesn't cause a total reversal of the fatty liver. But as everybody has been emphasizing in the discussion, that the only thing that really matters is good lifestyle. So we need to eat the right food. We need to reduce our processed foods. We need to have less beverages, particularly that contain fructose. So if you have fructose containing beverages, that increases the incidence of fatty liver disease. You need to have less of deep fried because हम Indian population carb ज़्यादा लेते हैं, deep fried food ज़्यादा लेते हैं, which burdens the liver with a lot of fat. And if you want to remove the fat, you need to exercise more. Right? And it's not just, simple exercise. लोग बोलते हैं कि मैं 5,000 steps चलता हूँ या 3,000 steps चलता हूँ. It's not just that is good enough. You need to do a very dedicated endurance exercise, at least for 30 to 40 minutes, where you're doing, brisk walking, jogging, swimming, cycling, which is going to help you. Do a lot of strength training exercises, reduce portion sizes of food. And as, they've said that you need to get at least about 10% of weight loss so that you can, metabolize all that fat out of the liver, which is going to give the liver breathing space, and it is going to cause less harm. Because as Pia said in the earlier segment, that if this liver stays, the fat in the liver stays for a long period of time, it is going to cause a lot of inflammation, fibrosis, and that is going to be leading to chronic liver disease. So we need to intervene early. We need to take the right steps. Of course, sugar control is good, but other than sugar control, because if we know that this is also associated with other problems like blood pressure, increase in stroke, increase of heart disease, then these potential risk factors should also be addressed along with the blood sugar control. सिर्फ शुगर कम नहीं करना है, अच्छे से एक्सरसाइज भी करना है, और एक्सरसाइज सिर्फ तब नहीं करना है जब आपको लगता है कि आप मोटे हो रहे हैं, पर एक्सरसाइज इन जनरल करना है फॉर अ हेल्दी लिवर एंड फॉर एन ओवरऑल हेल्दी बॉडी. हम इंडियंस अपनी फैमिलीज से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, तो डॉक्टर ऋषा, आप मुझे बताएं कि एज अ फैमिली मेम्बर अगर किसी को फैटी लिवर है हमारे परिवार में, तो हम उसे सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? मे बी थ्रू डाइट या स्ट्रेस मैनेजमेंट में, लेकिन क्या फैमिली मेंबर्स भी मदद कर सकते हैं? Have you ever tried to make any changes without your family's support? Have you ever tried to do anything that doesn't involve at least the wider environment, right? It's very necessary. Take, for example, yourself. You want to go out for a walk. Somebody's got to hold down everything else that needs doing. Take, for example, a young mom. She wants to get some exercise and she needs somebody to support her to look after the children. Take, for example, an elderly couple. You need to have support to be able to take time for yourself to make these changes. If I say to a man sitting in front of me, you have a fatty liver, you need to change your diet, without the support of the entire family, do you cook separately for him? Isn't it better for the whole family to change their habits, because then the whole family gets healthy? Because if people are eating the same high carb diet, if people are not moving together as a family, it's likely that not just one person, but everyone in the family or more than one person may have similar metabolic problems. So making these changes as a family improves not just the one person that you're consulting or advising, but the entire family's health. Not just the family, but you need the support of the entire ecosystem. I tell my people, for example, you go out and have lunch with your office workers. Finish lunch, go for a 20-minute walk with the same group. You come home with your neighbors, you're spending 10 minutes, catching up for the day. Move while you do it. So building these little lifestyle changes into your daily societal interactions, into your family interactions, and that will make it a lot easier. Never punish or stigmatize one person. You need to make these changes, because that becomes really isolating. The lack of a supportive infrastructure makes them feel victimized, picked on, guilty, but it doesn't really help facilitate change.
bring in the entire family, build a good supportive structure, give them the tools necessary to work through this as a family. And the entire family will thrive, the entire family's metabolic health will improve. Stigmatize one person, they'll change the doctor, not the lifestyle, ultimately. आई कम्प्लीटली अग्री, फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मैं शायद इस इंटरव्यू के बाद घर जाके अपने हस्बैंड को भी थैंक यू कहूँगी बिकॉज ही रियली पुशेस फॉर इट कि रात को हमें साथ में खाना खाने के बाद वॉक पे जाना है एंड देन वी कैच अप. सो नाउ आई नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर बोथ ऑफ आवर लिवर्स. तो मेटाबॉलिक बैलेंस और लिवर हेल्थ के लिए आप लोग कोई आसान से टिप्स दे दीजिए या ऐसी हेल्दी हैबिट्स जो हम लोग फॉलो कर सकें. आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है. कोई भी प्रॉब्लम जब हो जाता है उसके ऊपर हम एक्शन लेना चाहते हैं, पर हम कभी नहीं सोचते कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम. सो प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी इज फार सिंपलर देन ट्राइंग टू लूज वेट एंड मेंटेनिंग वेट, एंड वी ऑल नो हाउ डिफिकल्ट इट इज to maintain weight at a lower level. So if we adopt healthy lifestyles by exercising every day, eating the right portion size, eating the right kind of food that we need to give, eat more proteins, less carbs, walk more as we have been talking about, and also keep monitoring your health by periodic checkups. So if you look at your blood profile, you see very high lipids like cholesterol and triglycerides, which can park itself anywhere in the body, then we need to see that we take appropriate treatment for it. If we see abnormal values of your liver, then we should think, why is it so abnormal, right? अगर आप इमेजिंग करते हो और सोनोग्राफी पे आप फैटी लिवर देखते हो और वो कोरिलेट करता है आपके सब एबनॉर्मल ब्लड पैरामीटर से, देयर इज एन अर्जेंट नीड दैट यू नीड टू एड्रेस दिस. इफ लाइफस्टाइल फेल्स, then you need to start medications at the right time before it progresses and causes more and more harm. I think awareness is extremely important. कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपके फैमिली में किसी को तो आपको भी हो सकता है, और इसके साथ जुड़ी हुई बाकी भी जो तकलीफें हैं उसके बारे में भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है. जैसे आपका ब्लड प्रेशर हुआ, रिस्क हार्ट डिजीज़ के लिए हुआ, तो ये सब चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है. तो सिर्फ लिवर पे मत ध्यान दीजिए, बट ओवरऑल हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए. और हर टाइम में हम यही कहेंगे कि आपके वेट के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. मेरी तरफ से कहूँगी, eat right, eat less, exercise more, stress less, sleep more, screen time less, smile more. तो अभी जो भी लेस चल रहा है लाइफ में वो सब मोर करना है और जो मोर है उसको लेस करना है. हाय, सो आई थिंक मैं ऐसे समराइज़ करूँगा कि आपको याद रखना है, अगर आपको MSLD है तो ये 5 चीज़ें: खाना पीना, चलना, सोना और शुक्राना. आधा किलो तेल 1 महीने में पर पर्सन. आपको दिन में एटलीस्ट 2 फ्रूट्स खाना ज़रूरी है. नंबर 2. नंबर 3, आपको दिन में कम से कम 1 घंटा किसी टाइप की एक्सरसाइज करना है, चाहे सुबह करो, शाम करो या रात में करो. नंबर 4, मिनिमम 7 घंटा सोना, जिससे कि आपका शरीर का फ्यूल जो मिलता है स्लीप से वो मिलता रहे. स्ट्रेस कम करो, जो है उसके अंदर खुश रहिए, योगा करो, स्लीप अच्छी रखो, एंड दैट्स हाउ यू लिव हेल्दी, लिव लॉन्गर एंड लिव बेटर. थैंक यू. Very well summarized, Dr. Usha. I'm going to make it really practical because we always tell people eat better, all the things people have said, right? But when you go away, what do I mean by eat healthier? I'm going to give you one very easy tip. It's called the plate method. When you put food on your plate, 1 portion or a quarter carbohydrates, preferably complex carbs. Okay. 1 portion protein, 1 portion vegetables and fiber, and 1 more portion of one of those vegetables, fibers, salads, something like that. So half your plate, veg, fiber, protein, 1 quarter, some kind of a protein, and then 1 quarter complex carbs. Easy way to remember. आप 4 कटोरे ले रहे हैं, 1 rice, 1 दाल, 1 protein, 1 vegetable. हो गया आपका खाना. आपने जो कहा, मुझे वो बचपन में हम किताब जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे तो वो बैलेंस्ड मील का जो एक You would फोटो get होता that था photo, right? प्लेट का, Exactly. same And then we thing. forget. ये हम बचपन से ही बेसिक सीख रहे हैं पर हम फॉलो करना भूल गए. Exactly. हाँ, Ultra practical. Divide your plate, fill your portions, finished. क्या बात है. That was truly fascinating and a little alarming to understand just how interconnected our metabolic health is with our liver. ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हमारी बॉडी एक कंप्लीट सिस्टम की तरह काम करती है.
तो चलिए रिकैप करते हैं आज के एक्सपर्ट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कॉमन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, लिपिड इम्बैलेंसेस और पीसीओएस साइलेंटली आपके लिवर को सीरियस रिस्क में डाल सकते हैं। दूसरी बात, फैटी लिवर इज बिकमिंग सुपर कॉमन इन इंडिया, इवन इन पीपल who don't drink alcohol. Proactive steps जैसे mindful eating, stress management और regular doctor checkups आपके metabolic balance और liver दोनों को protect कर सकते हैं। My sincere thanks to our brilliant endocrinologists and diabetologists for making these complex connections so clear and understandable. अगर आप किसी को जानते हैं जो metabolic issues या weight concern से deal कर रहे हैं, तो please ये एपिसोड आप उनके साथ शेयर करें, उनके साथ बैठकर देखें। हो सकता है ये उनके लिए एक बहुत ज़रूरी पुश हो। फॉर मोर सिंपल एंड पावरफुल हेल्थ कॉन्वर्सेशंस सब्सक्राइब करें हमारे चैनल Zydus यूनिवर्स पर। एंड ऑलवेज रिमेंबर, योर लिवर इज वर्किंग हार्ड बिहाइंड द सीन्स। लेट्स गिव इट द सपोर्ट इट डिजर्व्स। लिवर की सुनो।